Hello student, I am Dr. S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopuri. The title of our presentation is Bioinformatics Part 2, Need and Scope. So here we are going to learn need and scope of bioinformatics. So what is the need and scope? Bioinformatics के बारे में हम देखेंगे. So content, Bioinformatics, a general account, components of bioinformatics, need of bioinformatics, and scope of bioinformatics. So this is the content of our presentation. So first of all, let us see, so what are the components of bioinformatics? The main component of bioinformatics is creation of databases. तो databases की निर्मिति करना ये bioinformatics का prime aim है. So therefore, a vast database has been created now. All over the world, the scientists are contributing to this database. Development of algorithms and statistics. This is another aspect and component of bioinformatics. तो यहाँ पे algorithms डेवलप किए जाते हैं और स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो भी डेटा आता है उसका एनालिसिस होता है. सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स. देन एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन. So whatever data is accumulated in the database from different sources, that data can be analyzed and its interpretation can be done. So analysis and interpretation is another aspect of this bioinformatics. So these are the three main components of bioinformatics. तो इसके ऊपर हमें गौर करना है, ध्यान देना है. Now let us see what is the need of bioinformatics. बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ज़रूरत क्यों आहे, काय गरज आहे बायोइन्फॉर्मेटिक्सची, त्याविषयी थोडक्यात आपण बघूया. सो लेट अस सी. ॲज आय टोल्ड यू, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज कन्सर्न्ड विथ बायोलॉजिकल डेटा अँड इट्स स्टोरेज, its dissemination, its application, and different aspects are related to the bioinformatics. So therefore, vast data that is accumulated on the server of the computer of the National Biological Information Center. तो ये जो सेंटर है वहाँ पे बहुत सारा डेटा accumulate होते रहता है, and that accumulated data needs to be compiled. So this is one of the important aspect related to the biological data. So compilation of biological data is the important aspect. Then this compiled biological data should be organized. इसका ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए. इट हैज़ टू बी मेंटेन प्रॉपरली, इजंट इट. इसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए. देन इट इज़ एनालाइज्ड, इजंट इट. द कंसर्न रिसर्चर, साइंटिस्ट टेंड टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर डेटा what is accumulated. Then it is computed. It is also related to computation, isn't it? The biological data is computed through biostatistics. Then the biological data needs to be retrieved, isn't it? One has to see that data again and again. So therefore, retrieval of the biological data is one of the important aspect related to bioinformatics. Then interpretation. The biological data should be properly interpreted. Then another aspect which is related to bioinformatics is simulation, isn't it? The biological data
can be used for different simulations, isn't it? तो हमें यहाँ पर जो बायोलॉजिकल डेटा होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, उसका सिमुलेशन भी करना होता है. So simulation helps to create our biological data in different imaginations. So simulation plays a vital role here. Then visualization of the biological data. So whatever biological data is accumulated, its visualization is also very important, isn't it? तो इमेजिंग भी हम कर सकते हैं. डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस. इमेजिंग, 3-dimensional images can be built for these biomolecules, different figures that can be imaged. Then reconstructed biological data जो होता है, उसके अंदर जो इमेजेस होते हैं, बायोलॉजिकल बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उसके केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उसका रिकंस्ट्रक्शन भी हम कर सकते हैं, और कंप्यूटर के ऊपर हम बता सकते हैं कि उसका कंपोजिशन कैसा है बायोमॉलिक्यूल्स का. देन दिस बायोलॉजिकल डेटा should be networked among stakeholders. So different stakeholders are there. These stakeholders should have access to this biological data, and this access should be global, isn't it? Now we are living in the age of LPG, that is liberalization, globalization and privatization. So all the world is now connected to each other. All the countries are connected to each other. So therefore the data should be globally accessed, and the data should be globally utilized, isn't it? Everyone from every country should be able to utilize that biological data for their own purposes, and ultimately for the use of humanity. So these are the few biological data needs that have enlisted here. You may add some more, but these are the few needs that is connected with bioinformatics. Similarly, what are the applications of bioinformatics, isn't it? हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? It can be used in gene therapy, isn't it? Gene therapy is also, it is an advanced field. In gene therapy, certain defective genes can be replaced. अगर कोई जीन बिगड़ता है, कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस काम नहीं करता है, डिसफंक्शनल हो जाता है, so there we can replace that particular gene through gene therapy. तो ये भी एक नया एस्पेक्ट है. Then evolutionary studies, isn't it? We can correlate different organisms, different species through their evolutionary line. So therefore evolutionary studies can be done with the help of bioinformatics. So इसका ये भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है. Microbial applications, isn't it? So bioinformatics can be used for different microbial studies and applications, isn't it? Utilization of different microbes for processing of different biological materials. तो उसके लिए भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ होता है. प्रेडिक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, different proteins are present in the cell, structural and functional proteins are there. So we can apply bioinformatics for the prediction of protein structure, isn't it? Sequencing of nucleotides, proteins
genomes, etc. So sequencing is also another field related to the biology. So gene sequencing, nucleotide sequencing, protein sequencing, etc. All these things can be done with the help of bioinformatics. Then medicine is one of the major field, and it is also growing gradually. So we can use bioinformatics in medicine also. Discovery of new drugs, isn't it? Different diseases are being treated with the different new kind of drugs. So therefore drug discovery can be done with the help of bioinformatics. Gene bank, isn't it? Storage of genes, preservation of germ plasm. This is called gene bank. So it is related to bioinformatics. With the help of bioinformatics, we can build different gene banks. SNP SNPs, that is single nucleotide polymorphism. So this is also a very important study related to mutation, isn't it? So nucleotides can be altered, isn't it? Single nucleotides can be altered, and corrective measures can be applied with the help of bioinformatics for single nucleotide where mutation occurs. Then pharmaceutical is also a big industry, and here you can use bioinformatics to upgrade our pharmaceutical knowledge, isn't it? Then HGP, that is Human Genome Project, that have been completed, and in this big project, entire human genome has been mapped and sequenced. So this is the very great achievement of human efforts, and there bioinformatics played a vital role. So these are the few applications I have listed here. Therefore, you can understand here what is the need and use of bioinformatics. So this is the list. You can add some more applications in this list. Now further we can visualize this use and need of bioinformatics. So here I have shown applications, databases, computational resources, then computer aided drug design, genomics, proteomics, exomics, molecular biology. So there are numerous things that we can do with bioinformatics, isn't it? So now information technology and its management. This is the growing field in the world of globalization. Information technology is playing vital role. So therefore, compilation and management of this biological data is very, very important. So in this way, you can see the bioinformatics is connected to different fields and different aspects of the biological and other sciences. So this is the figure and this is the chart that is showing connectivity of bioinformatics to different domains of knowledge. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये जो होता है ये मल्टी डिसिप्लिनरी प्रकार का साइंस है, बहुत सारे फील्ड्स उसको कनेक्टेड है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि research is going on everywhere in the world. So therefore research data from all over the world is coming up, and that data is being uploaded to the server of this bioinformatics
लैब्स। तो दुनिया में जितना भी रिसर्च हो रहा है वो डेटा जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, एंड नॉलेज, डिस्कवरीज, इन्वेंशन, पब्लिकेशन, इंटरप्रिटेशन, ये सारी बातें जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है. सो डे बाय डे यू विल फाइंड दैट enormous data is being accumulated all over the world, isn't it? So scientists from all over the world are dealing with this biological data. So this big data is not a manageable, isn't it? इसका मैनेजमेंट करना, इसका कंपाइलेशन करना, इसका स्टोरेज करना is becoming a big problem. It is not possible for humans to maintain this बिग डेटा. सो देयरफॉर लिंकिंग, फ्यूजन, एनालिसिस, ये सारी बातों से जो है तो साइंटिस्ट परेशान हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पर हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम का जो टूल है वो हमारे इस सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारे प्रश्नों का जवाब है. सो देयरफॉर यू कैन सी, यू कैन ईज आवर टेंशन, आवर ट्रबल विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स, isn't it? अगर ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स ना होता तो हम बहुत परेशान होते. हम ह्यूमन बींग्स को इतना बड़ा डेटा मैन्युअली या और किसी तरीके से मैनेज करना, इट वाज नॉट पॉसिबल. सो देयरफॉर यू विल फाइंड दैट दिस बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स आर वेरी वेरी यूजफुल. बहुत ही अच्छी तरीके का ये टूल हमारे हाथ में है अभी. We have developed this tool for managing and processing the big biological data. So you can understand the need of bioinformatics. तो यहाँ पे ये जो नीड है bioinformatics की, ये आप समझ सकते हैं. Now here is a simple example that I want to illustrate why bioinformatics is needed. इसका उपयोग क्या है, क्यों बायोइन्फॉर्मेटिक्स ज़रूरी हैं. तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि हम अब ये क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे बताया है. दिस क्रोमोसोम हैज़ ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, isn't it? So here you can see its parts, P arm, Q arm, isn't it? Centromere, telomere, and you can see this coiled DNA. यहाँ पे coiled DNA बताया. ये क्रोमोसोम बनता है ये DNA के माध्यम से. सो हियर दिस क्रोमोसोम इज अनवाइंड, isn't it? So you can see here this DNA is separated from the chromosome. और आगे चल के हम देखते हैं कि ये जो DNA है, DNA के ऊपर जीन्स है, isn't it? अब ये जीन्स आगे जाके हम देखते हैं कि ये जीन्स जो बनता है, ये डबल हेलिकल DNA मॉलिक्यूल और उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं उससे ये पूरा जो जीन और ये DNA का मॉलिक्यूल बनता है, फिर ये क्रोमोसोम बनता है. सो दिस कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट कैन बी रिवील्ड एंड कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, isn't it? That thing I want to emphasize here. How we are going to understand this complexity of this chromosome. So this complexity can be eased with the help of bioinformatics. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम बनता है वो किस प्रकार से बनता है, उसके अंदर क्या कंपोनेंट है, किस प्रकार से ये हाईली सुपर कॉइल्ड DNA मॉलिक्यूल हिस्टोन की मार्फत उसके न्यूक्लियोसोम बन करके किस प्रकार से कॉइल हो करके ये क्रोमोसोम बनता है, तो उसके अंदर क्या कंपोनेंट है. सो इसको समझने के लिए हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स की मदद होती है. आज हम इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. सो ये जो इमेजिंग बनती है, ये जो कंप्यूटर के माध्यम से ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको समझा जा सकता है, isn't it? So here you can understand that this nucleotide and नाइट्रोजन बेसिस adenine, cytosine, thymine, guanine, इसके माध्यम से ये हेलिकली वाउंड DNA कैसे बनते चले जाता है, और फिर से जीन्स जो है इसके ऊपर के फिर बाद में सुपर कॉइल हो करके हिस्टोन के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके ये इस प्रकार का क्रोमोसोम किस प्रकार से बनता है, इस उलझन को हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से अच्छी तरह सुलझाया है.
So therefore, you can understand the need of bioinformatics, isn't it? So this is the example I want to quote here to make you understand the need of bioinformatics. Similarly, another need of bioinformatics can be illustrated with this kind of example. So here you can see that this is the chromosome, isn't it? Centromere and its these arms, isn't it? This process or this analysis of this chromosome is called genetic mapping. So here you can see different kinds of maps can be generated with the help of बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से हम ये जो क्रोमोसोम है इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं, इसका मैपिंग कर सकते हैं कि ये क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स कहाँ कहाँ पे है और उसका जेनेटिक मैप हम बना सकते हैं और उसका डिस्टेंस भी हमने यहाँ पे बताया सेंटीमॉर्गन्स के माध्यम से. So therefore you can understand how this cytogenic map of a chromosome can be created with the help of bioinformatics, isn't it? This is a cytogenic map of a chromosome. This is genetic map of the chromosome. This is the physical map of the chromosome, isn't it? And then ultimately DNA sequence, isn't it? That is ATGC sequence can be understood, that is the nitrogen base sequence can be understood with the help of bioinformatics. So मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्रोमोसोम है इसका हर तरह से एनालिसिस, हर तरह से उसका हर एस्पेक्ट को जानना मुमकिन होता है विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, isn't it? म्हणून बायोइन्फॉर्मेटिक्सची गरज आहे, isn't it? बायोइन्फॉर्मेटिक्स का महत्त्वाचं आहे, त्याची गरज काय आहे तर हे जे क्रोमोसोम आहे ह्या क्रोमोसोमचे सर्व अंतरंग, ह्या क्रोमोसोमचे मॅपिंग हे आपल्याला विविध प्रकारे करता येते. वी कॅन प्रिपेअर सायटोजेनिक मॅप ऑफ द क्रोमोसोम, जेनेटिक मॅप ऑफ द क्रोमोसोम, फिजिकल मॅप ऑफ द क्रोमोसोम and its DNA sequences, that is bases, what kind of bases are there, ATGC bases. So we can understand the sequence. So this is the thing that we can do with bioinformatics, isn't it? तो यहाँ पे NIH के माध्यम से ये स्लाइड मुझे मिला है. सो थैंक्स टू दिस NIH, दैट इज़ नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो बहुत ही अच्छी तरह से ये स्लाइड है टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, isn't it? Similarly, again another example I want to illustrate here why bioinformatics is needed, isn't it? Now here you can see the example, isn't it? Every protein is made up of a sequence of amino acid bonded together. So here you can see the amino acid chain. So this is the amino acid chain, isn't it? अभी ये जो अमीनो एसिड चेन है इससे इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं. दीज अमीनो एसिड्स इंटरैक्ट लोकली टू फॉर्म शेप्स लाइक हेलिसेस एंड शीट्स, isn't it? Now you can see these amino acids, isn't it, interact among itself, isn't it? उसके जो अमीनो एसिड्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और they can produce this helix called alpha helix, isn't it? अब ये अल्फा हेलिक्स का इमेजिंग हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट ए 3-dimensional image of this alpha helix with the help of bioinformatics, isn't it? Similarly, pleated sheet. So here another kind of sheet which is formed out of these amino acids, isn't it? So you can create the image of this pleated sheet of the protein molecule, isn't it? These shapes fold up on large scales to form the full 3-dimensional protein structure. So here you can see this pleated sheet is created, isn't it, including this alpha helix. तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते चले जाता है प्रोटीन का, उसको हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से उसका इमेजिंग कर सकते हैं, उसका जो
थ्री डायमेंशनल व्यू है वो हम क्रिएट कर सकते हैं. So proteins can interact with other proteins, forming functions such as signaling and transcribing DNA, isn't it? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो करके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बन सकते हैं, isn't it? और ये जो इमेजिंग है दो प्रोटीन का इंटरेक्शन किस प्रकार से हो सकता है, उसके बीच में किस प्रकार के बॉन्ड्स तैयार हो सकते हैं और वो किस प्रकार से उसका इमेज बन सकता है, उसका ये स्ट्रक्चर इमेजिंग we can do with bioinformatics. So here 3D imaging of the protein structure, primary quaternary structures can be understood with the help of bioinformatics. So हमारा जो स्टडी है प्रोटीन के बारे में वो बहुत इजी हो जाता है और इसीलिए ही बायोइन्फॉर्मेटिक्स ज़रूरी है. सो हियर आई वुड लाइक टू clarify you what is the need of bioinformatics. So in this way you can see the need of the bioinformatics, isn't it? So in this slide you can see the scope of bioinformatics. इसका scope क्या है? Bioinformatics का जो स्टडी करने का जो डायमेंशन है वो क्या है? बहुत बड़ा डायमेंशन है उसका, बिकॉज इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. It is related to genomics, isn't it? With the help of bioinformatics, you can go for genomics, isn't it? ये भी स्टडी कर सकते हैं. प्रोटियोमिक्स ये भी स्टडी आप कर सकते हैं. प्रोटीन के बारे में डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं. जीनोम के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं, isn't it? जीनोम्स के अंदर पूरा किसी भी स्पेसीज का जो जीनोम है, you can study that entire genome and you can map all the genomes of the particular species. You can learn all the proteins in the cell, isn't it? With the help of proteomics. You can understand the phylogeny, evolutionary relationship of different species, different kind of organisms. So you can create a phylogeny with the help of bioinformatics. जीन क्रोमोसोम मैपिंग कैन बी डन. जैसा कि अभी हम पिछले स्लाइड में देखा है कि जीन क्रोमोसोम का हम मैपिंग भी कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ मैपिंग वी कैन लोकेट स्पेसिफिक जीन, वी कैन लोकेट स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस हम लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जीन और क्रोमोसोम मैपिंग. सीक्वेंसिंग कैन बी डन, isn't it? We can specify the sequences present in a specific gene, isn't it? Within a DNA molecule we can specify the specific sequences of ATGC. So this sequencing can be done. Gene banking is another aspect, isn't it? It is useful to preserve specific species. There are some species that are going to be extinct. So such important and extinct species can be preserved with their germplasm, their in gene banks. तो जीन बैंक के माध्यम से हम बहुत इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जो स्पेसीज होते हैं हमारे प्लानट के ऊपर, तो उसका प्रिजर्वेशन भी हम कर सकते हैं इन जीन बैंक्स. ड्रग डिजाइनिंग इज ऑल्सो न्यू फील्ड, isn't it? Different kinds of drugs, especially drugs related to cancer treatment, isn't it? So these drugs can be designed. Now there is synchronization and fusion of different pathies, isn't it? Allopathy, homeopathy, Ayurveda, etc. So all these drugs are being explored, and there is a fusion and synchronization of different kinds of drug domains. So therefore drug designing and the utility of drug can be estimated with the help of bioinformatics. Biomolecule imaging is also very important. So different biomolecule वो किस प्रकार से उसका कंस्ट्रक्शन होता है उसका भी इमेजिंग हम कर सकते हैं with the help of bioinformatics. So study of different biomolecules can be done with bioinformatics. Interpretations, annotations, so you can interpret, isn't it? Researcher can observe and interpret their opinions in the form of annotations. So this can be done
and this entire interpretation and annotations can be uploaded in the server of bioinformatics. DNA sequencing is also, as I told you, sequencing. So DNA का sequencing भी हम कर सकते हैं, जैसे कि HGP में किया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर entire human DNA is sequenced. So this is the wide scope of the bioinformatics. So this is the thing that you have to understand. So here I have explained the need and scope of bioinformatics. तो यहाँ पे जो जीन बैंक के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जीन बैंक। क्या होता है जीन बैंक? So here is the image of the gene bank, isn't it? देखो किस प्रकार से ये जर्म प्लाज्म और जीन का जो डीएनए के जो ये है सेगमेंट्स हम प्रिजर्व कर सकते हैं, isn't it? या सीड भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, isn't it? So what are these gene banks? Gene banks are a type of biorepository, isn't it? It is a biorepository. What is gene bank? Gene banks are a type of biorepository that preserves genetic material for plants. This is done by in vitro storage, freezing, cutting from the plants or stocking the seeds. Example, in a seed bank. For animals, this is done by the freezing of sperm and eggs in zoological freezers until further need. So as I have mentioned that we can preserve these rare genes, isn't it? There are some species that are going to be extinct. So their germplasm or their genes can be preserved in the form of DNA or in the form of seeds or in the form of sperm or egg. तो इसके माध्यम से इस प्रकार से हम at proper temperature and at proper condition we can maintain such gene banks. तो जिस प्रकार से हमारा पैसों के लिए बैंक होता है, उसी प्रकार से अभी जीन का भी बैंक है. तो वहाँ पर जा कर के हम जेनेटिक मटेरियल डिपॉजिट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, isn't it? So genetic material in a gene bank is preserved in a variety of ways. So see here how the genetic material can be preserved, isn't it? There are a number of methods and ways for the preservation of this genetic material. One of the method is freezing at 196 degrees Celsius in liquid nitrogen, isn't it? It is being placed in artificial ecosystems and put in controlled nutrient mediums, isn't it? तो इस प्रकार से हम बहुत ही लो टेम्परेचर को नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ये सारा प्रिजर्व कर सकते हैं. बहुत सालों तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं, isn't it? Because this is the natural gift and natural treasure that is available to humans. So it is the duty of human being to preserve this natural treasure, isn't it? जो कुदरत ने हमें दिया है, वो सारा जो कुदरत का जो इतना बड़ा ख़जाना है, उसको हम प्रिजर्व करना चाहिए. जो भी स्पेसीज़ है, एनिमल है, प्लांट्स है, उसको इस प्रकार से हम जीन बैंक के अंदर रख करके आने वाले जनरेशन के लिए उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. सो देयरफॉर जीन बैंक्स आर वेरी नॉवेल कंसेप्ट, isn't it? Then scope of bioinformatics, genome and genomics, ये भी है. जीनोम जो होता है वो क्या होता है? The genome is the entire set of DNA instructions found in a cell, isn't it? तो जीनोम क्या होता है? The genome is the entire set of DNA instructions found in a cell. सेल के अंदर जितना भी DNA का इंस्ट्रक्शंस है, DNA का स्ट्रक्चर है, DNA है, that is called genome. In humans, the genome consists of 23 pairs of chromosomes located in the cell's nucleus as well as a small chromosome in the cell's mitochondria. A genome contains all the information needed for an individual to develop and function. So therefore you can understand
genome is nothing but the entire genetic composition of a particular cell or organism, isn't it? तो ये जो जीनोम है, तो ये इसका पूरा के पूरा हम डिटेल्स निकाल सकते हैं कि ये जीन जीन के अंदर ये जीनोम के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है और ये क्रोमोसोम के ऊपर कितने जीन्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम अब इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसको हम जीनोमिक्स कहते हैं, स्टडी ऑफ एंटायर component of the genome of a particular species or particular organism, isn't it? So genomics क्या है? So here I have told genomics is an interdisciplinary field of biology focusing on the structure, function, evolution, mapping and editing of the genome. तो सारा के सारा स्टडी हम यहाँ जीनोम का कर सकते हैं. एंटायर जीनोम कैन बी अंडरस्टूड, isn't it? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये देखिए अभी ये समझो ये एक जीन है, isn't it? उसका ये ट्रांसक्रिप्शन होते वक्त ये प्रोमोटर, उसके अंदर फिर ये जो डीएनए है उसका एक्सॉन इंट्रॉन इस प्रकार से ये होता है उसका कंपोजिशन, isn't it? इंट्रॉन इंट्रॉन ऐसे सेगमेंट्स होते हैं. और जो उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, isn't it? ट्रांसक्रिप्शन, isn't it? तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक्सॉन का पूरा ट्रांसक्रिप्शन होता है. दिस एक्सॉन इज हैविंग द कैपेसिटी टू ट्रांसक्राइब, isn't it? तो ये जो नॉन फंक्शनल पार्ट्स होते हैं इंट्रॉन के जैसे, तो वो निकाल दिए जाते हैं. तो ये जो जीनोम है ये किस प्रकार से फंक्शन करता है उसको अंडरस्टैंडिंग हम जीनोमिक्स के माध्यम से कर सकते हैं, isn't it? तो अभी जैसा कि मैं यहाँ फिगर में बताया कि ये जो है तो ये एक जीन है, isn't it? ये सीक्वेंस है और उससे ये ट्रांसक्रिप्शन बन करके आरएनए बन गया, isn't it? तो इससे ये आरएनए बन गया और ये आरएनए का फिर प्रोसेसिंग हो करके फंक्शनल एमआरएनए बन गया. ये स्प्लाइसिंग होगा. ये देखो ये रेड रीजन्स निकल गए, इंट्रॉन्स निकल गए, खाली एक्सॉन्स बच गए. अभी ये एक्सॉन्स का क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है. ये ट्रांसलेशन हो करके यू विल फाइंड दैट देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड चेन, isn't it? फिर इसके ऊपर थोड़ा प्रोसेसिंग हो करके फिर बाद में प्रोटीन बनता है. तो यहाँ यू कैन सी दिस हाउ दिस जीनोम इज फंक्शनिंग. दिस थिंग वी कैन अंडरस्टैंड इन जीनोमिक्स. तो जीनोमिक्स में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो ये होता है जीन होता है वो किस प्रकार से अपना एक्सप्रेशन देता है उसका ये पूरा स्टडी स्टेप बाय स्टेप स्टडी वी कैन डू इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स. So in this way you can understand how this bioinformatics is applicable. What is its utility, isn't it? तो इस प्रकार से मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जीनोमिक्स जो होता है तो जीनोम का फंक्शन बताता है, isn't it? उसका एक्सप्रेशन बताता है किस प्रकार से वो एक्सप्रेस होता है वो एंटायर जीनोम. तो उसका स्टडी हम जीनोमिक्स में करते हैं. सो देयरफॉर दिस इज द वाइड स्कोप ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. सो आई ट्राई टू गिव फ्यू एग्जाम्पल्स. तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि नीड और स्कोप क्या है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का. व्हाट इज़ द नीड एंड स्कोप ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, isn't it? सिमिलरली प्रोटियोमिक्स भी है. तो प्रोटियोमिक्स क्या होता है? प्रोटियोमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इंटरैक्शंस, फंक्शंस, composition and structures of proteins in the cells and their cellular activities and interactions with biomolecules. So here you can see the wide scope of this proteomics, isn't it? So in this proteomics you are going to learn the entire protein composition of a cell or of an organism, और उसका प्रोटीन का बाकी मॉलिक्यूल के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, ये सारी बातें हम प्रोटियोमिक्स में पढ़ते हैं जैसा कि मैंने यहाँ बताया, isn't it? So this is the DNA. So this is DNA is genome, isn't it? DNA is genome. DNA से फिर ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से बनता है RNA. So it is called transcriptome, isn't it? So this is called transcriptome. फिर इससे बनता है प्रोटीन, तो इसको कहते हैं प्रोटियोम. तो वट एवर द एक्सप्रेशन ऑफ दिस DNA isn't ultimately results into proteins, and this entire component of the protein is called proteome. तो इसका हम प्रोटियम बनते हैं. तो ये प्रोटियम का इंटरेक्शन शुगर से, न्यूक्लियोटाइड से, अमीनो एसिड से, लिपिड से किस प्रकार से होता है,
isn't it? Because protein has different relations and functions with different biomolecules. तो उसका प्रोटीन का जो इंटरेक्शन होता है और मॉलिक्यूल के साथ वो किस प्रकार से होता है, दैट इज कॉल्ड मेटाबोलम, isn't it? So it is called metabolome. So this is the thing, isn't it? Means we are correlating this protein, entire component of the protein which is present into the cell, and its relation with other biomolecules, isn't it? Other metabolites. ये जो मेटाबोलाइट्स है उसके साथ प्रोटीन का किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, isn't it? So that thing we are learning in this proteomics. तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है प्रोटियोमिक्स. तो प्रोटियोमिक्स के अंदर प्रोटीन का पूरा स्टडी करते हैं हम, उसका स्ट्रक्चर से लेकर उसके फंक्शंस और उसके इंटरेक्शंस विद अदर मेटाबोलाइट्स, ये सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ते हैं. सो दिस इज कॉल्ड प्रोटियोमिक्स एंड ऑल दिस स्टडी कैन बी कैरिड आउट अंडर दिस साइंस कॉल्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स. सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा फील्ड है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जहाँ पे हम ये सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं. सो इन दिस वे I tried to explain you all these things that is need and scope of the bioinformatics. Hope you understood this presentation. So I recommend that you have to view this presentation repeatedly and prepare your own notes. Okay. So thank you friends. Thank you very much.